Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good the time that you have. Hope you all will be doing great. Uh, Welcome to this second video of general knowledge series that we have been doing with the second batch for HN Academy. तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज मोर सॉर्ट ऑफ ऑल अबाउट द फर्स्ट इन द पाकिस्तान की पाकिस्तान में जो पहले पहले कुछ चीजें जो पहले हुई। ठीक है, पहले का मतलब कि जो सबसे पहले हुई। ठीक है, तो ये जो जनरल नॉलेज है ये सारा जो है उस जो है बेस पे है। तो आइए हम जो है इसमें देखते हैं कि इस टॉपिक में हमारे लिए क्या क्या होगा। ठीक है, और अगेन विच आई विल लव टू कन्वे दिस के जनरल नॉलेज को याद रखने के लिए आपको जो है खुद से चीज़ों को खुद से ट्रिक्स जो है और टेक्निक्स जो है वो जो है बनानी पड़ेंगी, ताकि जब आप खास करके जब आप उसको एब्रीविएशंस में करेंगे ना चीज़ों को। ठीक है, फिर जो है आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज यही है कि जो है ना उसमें आप आगे याद करते जाते हो, पीछे भूलती जाती हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ट्रिक्स या टेक्निक्स या ऐसे जो है शॉर्टकट्स का थोड़ा सा आपको सहारा इसमें लेना होगा। ठीक है, तो इस जनरल नॉलेज की सीरीज में हम जो है इसमें जो है करंट अफेयर्स का भी जिक्र होता है और इसमें जनरल साइंस का भी जिक्र होता है। तो जो है इसको आप विजिट करते रहिएगा, क्योंकि इसमें हम इन फ्यूचर वो चीज़ें भी कवर अप करेंगे। So, the first one is the first Governor General of Pakistan was Qaid Azam, right? He was since the partition of 1947, Pakistan being into its existence, as we had in our previous lecture that Pakistan got its independence on 14th August 1947. So after that, the first Governor General was Qaid Azam, और पहले प्रेसिडेंट बने वो सिकंदर मिर्जा, and then Liaquat Ali Khan was the first prime minister, right? And then we had Field Marshal Ayub Khan to be the elected. ओके, फर्स्ट जो थे, जो सेकंड नंबर पे थे वो इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, वो उस टाइम पे इतनी पार्टीज नहीं बनी थी और ऑल ऑफ अ सडन था। ठीक है, तो उस टाइम जो लोग होंगे पार्टी के, उन्हीं में से जो है ना विदाउट इलेक्शंस। ठीक है, और जो नंबर चौथे थे अयूब खान, वो इलेक्शंस इलेक्टेड। ओके, सो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विल बी अयूब खान। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, जेडे भुट्टो। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जो थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ओके, नूरुल अमीन थे। एंड देन वी हैव फर्स्ट चीफ जस्टिस, राइट? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज जस्टिस सरदार अब्दुल रशीद। ओके, एंड देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1956 में। आपने सोशल स्टडी की किताबों में ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 1956 मार्च 23। आफ्टर दिस वी हैव अ फॉरेन मिनिस्टर। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर वाज सर जफरुल्लाह खान। ठीक है जी। एंड देन फर्स्ट कमिश्नर वाज एफ एम खान, फतेह मोहम्मद खान, एफ एम खान, राइट? तो ही वाज आवर फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, राइट? फर्दर, first barrage that was constructed, which was in 1932, and it was Sakhar Barrage, right? We have Gudu Barrage, we have Kotadi Barrage, right? So, but the first one was constructed in 1932, and it was Sakhar. First governor of State Bank, Zahid Hussain, and martial law uh, was imposed on Pakistan. First martial law, right? It was 7th October 58, and captain of Pakistani cricket team, first ever, and it is Hafiz Qadar. Even if you are a cricket fan, you would be knowing that he captained the Pakistani team for the very first time.
and first chairman of Senate, Habibullah Khan Marwat, first public airline, right? There's a difference, and public airline, it is Orient Airways, and first international airline, and that is PIA. So you need to uh, differentiate between the two. Orient Airways is the first public airline. First capital, Karachi used to be our first capital, and TV station, first TV station was Lahore, right? And then first nuclear reactor, like the plant we are talking about here, that is Karachi nuclear power plant in 72. First Pakistani who received Nobel Prize, Dr. Abdul Salam, in 79, 1979. Then we have first woman Prime Minister, Benazir Bhutto Sahiba, and with her, first female Speaker of the National Assembly. We have the National Assembly and we have the Provincial Assembly, right? So, for female Speaker, first female Speaker of National Assembly was Fahmida Mirza Sahiba. First Finance Minister of Pakistan was Ghulam Muhammad, and first census, जिसको हम मर्दमशुमारी कहते हैं, जो कि which is also continued, which is also ongoing nowadays in Sindh, right? So first census in Pakistan is 1951. That happened in 1951, very big in 1951. Okay, and first natural gas reserves were discovered in Pakistan. That is Sui. Even we have Sui Southern gas and Sui Northern gas. Still, that is Sui. So it's 52, 1952. First time we won the World Cup 1992 under the captaincy of Imran Khan, right? So Cricket World Cup, and that is the only World Cup we have won so far. Okay, Pakistan's first cabinet sworn, that is August 15, 47, and first news agency is PPA news agency. All right, and the first state, like there were a lot of states in India during the time of partition. So first state that came into the part of Pakistan was Bahawalpur, and the first railway track were Karachi and Kotri, which is in 1861. Okay, so these were some of the startups. 30 first. There are lots of course. The list is never ending, but these are some of that we covered in this. So do check these out, and have tricks and methods to remember these, because when you go for ratification, you will you're bound to forget more sort of things. So try to have the smaller tricks to remember these. Thank you.